पीजे नाथ साहब हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका। पहले तो नंबर्स पर हम देख रहे हैं सर, नंबर रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ठीक है, ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर पॉइंट ऑफ व्यू से तो क्या खास वजह रही सर रेवेन्यू अच्छा जो दिखा है? व्हाट फैक्टर्स लेड टू इट? देखिए देर आर यह दो कारण हैं मेनली। पहला तो ये है दैट मेन बिजनेस दैट वी आर इन व्हिच इज VSAT services or satellite communication services. We cater to two major segments, which is the enterprise and aero, IFC and maritime. अब दोनों सेगमेंट में हमारा बिजनेस काफ़ी अच्छी हुई है. We have increased our capacity significantly during the last year, and that has led to larger business. Apart from that, दूसरा कारण ये है that last quarter we also executed some of the system integration project for what we call as a satellite communication projects business, and that has also given us some additional revenue. So therefore, the overall you see good growth on a year-on-year basis as well as on a quarter-on-quarter basis in terms of revenue, and that's been a good story for us so far. ओके, मिस्टर नाथ, ये तो रेवेन्यू की बात हुई, बट मार्जिन्स की बात करें तो वहां पर थोड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला है अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस से कंपेयर करें। क्या रीजंस थे? इसमें भी दो कारण है. पहला तो ये है कि that revenue mix has changed. As I said, last quarter there has been some revenue pertaining to satellite communication system integration business, and you'll understand that system integration business, the margins are lower as compared to your services business, and that is one reason why there has been a bit of a pressure in terms of the margin as a percentage margin. दूसरा कारण ये है that last quarter we incurred some one-time expenses for improving some of our operational infrastructure, but that is one-time in nature. These two combined has had an impact in terms of the percentage margin showing lower than what it was 1 year back. So I think that is the main reason for this, but it's been more of a one-time. श्योर सर. सर एक मार्केट पोजीशन अगर हम देखें आपकी स्ट्रांग है इन द नीश वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल वीसैट इंडस्ट्री जिसे बोलते हैं, क्या रेवेन्यू विजिबिलिटी है फॉर दिस ईयर सर इस पर्टिकुलर स्पेस में? इससे देखिए VSAT सर्विसेज ये हमारा मेन बिजनेस है. इसको सैटेलाइट कम्युनिकेशन सर्विस भी बोला जाता है. सो दिस इज द मेन लाइन ऑफ बिजनेस. हम लोग गाइडेंस नहीं देते. वी डोंट गिव अ गाइडेंस इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द ईयर. But the first quarter is an indicative, except that there is a bit of a satellite communication projects business. But otherwise, the order book looks good. Our infrastructure has grown significantly over last year, as we have already mentioned in our AGM. So therefore, the revenue from the VSAT business or satellite communication services business will be strong going forward in this year. विजिबिलिटी है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू जो आप आगे बता रहे हैं सर. बिग ग्रोथ दिख रही है मोबिलिटी में और हम आपसे जानना चाहेंगे आप इसको कैसे कैश इन करेंगे, क्योंकि आपकी पार्टनरशिप्स है विद टेक्नोलॉजी वेंडर्स लाइक पैनासोनिक, एवियोनिक्स कॉर्पोरेशन, उसको लेकर क्या फोकस है और आगे भी पार्टनरशिप्स एक्विजिशंस पर क्या फोकस होगा कंपनी का? देखिए आप सैटेलाइट कम्युनिकेशन, आप जब मोबिलिटी का बात करते हैं, इट इज मेनली द एयरक्राफ्ट कम्युनिकेशन and maritime communication. As of now, the surface communication is not yet allowed. So therefore, and we as Nelco have started both the services, that is internet on aircraft while flying over India, as well as communication on maritime vessels in Indian water. दोनों ही service हम 2020 before the pandemic launch कर चुके थे, and therefore we have a fairly strong customer base on this. So this is going quite well. However, as of now, it is mainly the international aircrafts and international maritime vessels जो Indian region में आते हैं, they are using the services. But as we go along, in the next 1 to 2 years, the domestic airlines companies will also start offering internet on aircraft while flying, and that would be a big growth. But otherwise, mobility has been a strong sector for us, and we see this to be growing. And in due course, when the government also allows us to offer mobility on surface, that is on trucks and buses and cars, that will be another growth segment which will come up.
ओके, तो वो एक और एवेन्यू मिलेगा आपको ग्रोथ का, बट अभी तो मैरीटाइम और एयरक्राफ्ट जैसे आपने कहा, वहाँ पर फोकस है। सर बैंडविड्थ और सर्विसेज़ यूसेज सेगमेंट की बात करें, वो 75 टू 80% आपका कंट्रीब्यूट करता है रेवेन्यू में। रेवेन्यू विजिबिलिटी फॉर दिस ईयर FY 23 इस स्पेस में क्या होगी एंड करंट चर्न रेट क्या है सर? ठीक है, churn rate is not very significant for the satellite communication businesses. It essentially happens because of substitution. जब वहाँ पे आपका terrestrial network available होता है, तो some of the customers move out of VSAT. Otherwise, we don't see much of a churn in the satellite communication business. The business will grow. As I said, we don't give a forward-looking statement, but the first quarter numbers could be an indicator. But for the projects business in terms of our growth during this year. ओके, तो फर्स्ट क्वार्टर से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आगे किस तरीके की ग्रोथ होगी और प्रॉमिसिंग प्रॉस्पेक्ट्स हैं, जैसा मिस्टर नाथ कह रहे हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद मिस्टर नाथ हमसे जुड़ने के लिए।